चलो तो आज स्टार्ट करते हैं oogenesis. Okay, the story of oogenesis. I am telling you the oogenesis in the form of a story. So oogenesis, so germ cells, in the female ओवरी में बनते हैं तो हम उसे कहेंगे ओवम. तो वो कैसे बनेंगे और कैसे मैच्योर होंगे, दैट्स द oogenesis. तो वो रिलेटेड है रिप्रोडक्शन. ओके, तो रिप्रोडक्शन इज ए फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म. जैसे कि एक ट्री बनता है, तो ट्री कहाँ से बनता है? एक सीड में से. फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर उस पे फ्रूट्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, और फिर से वो सीड बनता है. ओके, तो हम oogenesis को कंपेयर करेंगे इस पूरी प्रोसेस के साथ, कि सीड के साथ. हम देखेंगे ये सीड कब बनता है. ओके, सीड को हमने प्लांट तो कर दिया, वो ट्री बन रहा है. ओके, अब इस प्रोसेस में वो सीड कब बनेगा. ओके, so let's start. तो हम बोलेंगे, so these are the words, थोड़े से वर्ड्स हैं. let's see. primordial sex cells, primordial germ cells, PGC. primordial female germ cells, primordial male germ cells. तो germ cells कहाँ पे होते हैं? फीमेल में ओवरी में होते हैं और मेल में टेस्टिस में होते हैं. हम oogenesis देखेंगे तो जो भी हम प्रोसेस देखते हैं उसकी क्या होता है. पहले oogoनियम होता है. oogoनियम वो मिटोसिस से डिवाइड होता है. ओके, एक सेल दो में डिवाइड होता है. ओके, तो क्रोमोसोम भी दोनों सेल में इक्वली रहते हैं. तो वो जब भी डिवाइड होता है, डिवीजन कंप्लीट होता है, फिर ये oogoनियम थोड़ा सा एनलार्ज होता है एंड स्टार्ट होता है मियोटिक डिवीजन. फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, second meiotic division, and after the second meiotic division completion हमें मिलता है एक ओवम. और वो ओवम मैच्योर ओवम फर्टिलाइज होता है स्पर्म से और जाइगोट से. So primary oocyte completes the first meiotic division. उससे बनेगा secondary oocyte. large cells, primary oocyte divide and it divides into the one large cell and one small cell. जो लार्ज सेल है उसको बोलेंगे सेकेंडरी oocyte और स्मॉल सेल उसको बोलेंगे फर्स्ट पोलर बॉडीज. एंड हियर इट कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन. तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में क्या होगा? क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे. पहले 2n diploid number of chromosome, then it is a haploid number of chromosome. Now the secondary oocyte enters into the second meiotic division. फिर फर्स्ट meiotic division के कंप्लीट होने के बाद तुरंत ही बाद सेकंड meiotic division स्टार्ट हो जाएगा. बट सेकंड meiotic division तभी कंप्लीट होगा जब when it is fertilized by the sperm. स्पर्म से फर्टिलाइज होगा तो फिर से डिवाइड्स इनटू द टू सेल्स. one cell receives the large amount of cytoplasm, that is known as the ovum, and other cell form the
second polar body. Now the first meiotic division to the second meiotic division, this inside is growing. Okay, so primary follicle, secondary follicle, mature follicle and then ovum. तो हम सारे स्टेजेस उसके देखेंगे कि वो कैसे डेवलप होता है। इस प्रोसेस को हम इस आइसबर्ग के साथ कंपेयर करेंगे कि हमने देख लिया कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, सेकंड मियोटिक डिवीजन, पहले तो मिटोसिस, फिर माइटोसिस, फिर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, सेकंड मियोटिक डिवीजन एंड वी गेट द मैच्योर ओवम। बट इस सारी प्रोसेस के पीछे क्या क्या प्रोसेसेस है वो हम देखेंगे कि ये आइस कितना डीप है। ओके, उसके लिए कितना टाइम लगेगा और कितनी प्रोसेसेस। तो ओवम बनने के लिए पहले हमें जर्म सेल चाहिए। ओके, सो द प्राइमोर्डियल जर्म सेल, सबसे पहले जो जर्म सेल्स होंगे हम उसको बोलेंगे प्राइमोर्डियल जर्म सेल। So they do not develop in the gonads. Means they do not develop in the testis or ovaries mainly. The germ cells in the ovaries is a Oogonium, तो हम इसको बोलेंगे शुक्राणु एंड अंडकोश। टेस्टिस परमेटोगोनिया को बोलते हैं शुक्राणु और यहाँ पे अंडकोश इन द ओवरी। तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स PGC do not develop in the gonad। तो वो कहाँ पे डेवलप होंगे उसके लिए पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि डेवलपमेंट, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है ओवम तो फिर क्या होता है, तो जाइगोट बनता है, फिर जर्म डिस्क होती है। तो 3 लेयर ऑफ द जर्म डिस्क, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। So ectoderm is surrounded by the amniotic cavity. Endoderm is related to the yolk cell. So from the mesoderm, in the mesoderm there is an intermediate mesoderm. Okay? Paraxial mesoderm, intermediate mesoderm and lateral bed. So intermediate mesoderm में genitourinary system develop होता है, genital organs and urinary system. तो intermediate mesoderm में से testis और ovary develop. So when this germ disc is folded, this yolk sac is goes inside this germ disc. तो primordial germ cells ovary और testis में नहीं डेवलप होते हैं, वहाँ पे डेवलप होते हैं इन द yolk sac। कब डेवलप होते हैं, तो at the end of the third week in intrauterine life before birth. So these primordial germ cells develop by proliferation of the endodermal cells of the dorsal wall of the yolk cells। यहाँ पे बनेंगे, फिर वो माइग्रेट होके इंटरमीडिएट मेसोडर्म में जाएंगे। इंटरमीडिएट मेसोडर्म में वो कैसे डेवलप होंगे, टेस्टिस और ओवरी। तो वहां पे फिर सबसे पहले वो एलिवेशन होगा, तो उसको बोलेंगे जेनाइटल रीच। So these primordial germ cells migrate to the intermediate mesoderm, migrate to the germ genital reach. Primordial germ cells formed at the end of the third week. They migrate
At the end of the 5th week, in the developing gonad, okay, developing ovaries or developing testes. Up to the 5th week, this development is this formation of the primordial germ cells are both are same for the ovaries and testes. Okay, अब हम देखेंगे ovaries में क्या हो. Okay. So at the 5th week, the primordial germ cells migrate to the developing gonad. So 5th week before the birth, intrauterine life. तो जैसे ही वो ओवरी में आएंगे, इट डिवाइड्स. ओके, एक में से दो हो जाएंगे. तो और इसको हम बोलेंगे ऊगोनिया. ओके, so oogonia lies in the ovary. So on arrival in the ovary, primordial germ cells divide rapidly by mitotic division and differentiated into oogonia. So these primordial germ cells divide up to the 7th month of intrauterine life. Thereafter, it stops. Okay. Then what happens? This oogonia increase in cell size and differentiated into primary oocyte. So this is the small part of the developing embryo. Here we can see this is rich intermediate mesoderm. Here the gut that develops from the yolk sac. Okay, yolk sac incorporated in the folding embryo and they form the gut. So these primordial germ cells migrate through the mesentery from the dorsal wall of the yolk sac to the developing gonad in the genital ridge, elevated part in the intermediate mesoderm. तो यहाँ पे भी ओवरी भी डेवलप हो रही है. तो जब ओवरी डेवलप हो रही है तो it is covered by cells, and these cells divide and goes into the ovary. And meanwhile, these primordial germ cells enter into the ovary. Then what happens? These cells, it is known as the follicular cells. So these follicular cells surrounds the ovary. So this oogonia and the follicular cell, it is known as the primordial follicle. It is known as the primordial follicle. तो अब हम oogonia को बोलेंगे प्राइमरी oocyte. So the primary oocyte is surrounded by flattened epithelial cell known as the primary ovarian follicle or primordial follicle. तो ये कब बनेगा? After 7 months of intrauterine life and before birth. और बाद में क्या होगा? First meiotic division, second meiotic division, and meiosis. So here is the primary oocyte enters into the prophase of the first meiotic division. So these are the different stages of the development of the follicle. How this follicle is formed. These the processes of the oogenesis में क्या क्या होगा? Which processes in the oogenesis? It is a mitosis, meiosis, growth of the follicles, and differentiation of the follicle. Okay, so Oogonium divides by mitosis, then it converted into primary oocytes or primordial follicles. Then primary oocytes by first meiotic division,
it converted into the secondary oocytes, and from the secondary oocyte there is a ovum. An ovum fertilized by the sperm and it forms the zygote. And zygote contains the chromosome of the ovum and the sperm. So there is a diploid number of chromosomes. So processes in the oogenesis is mitosis, meiosis, growth of the follicles and differentiation of the follicle. So primary oocytes complete the prophase of first meiotic division. So डिविजन्स में कौन कौन से फेजेस होते हैं? इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, and it divides into the two cells. So this primary follicle completes the prophase of the first meiotic division. Then primary oocyte enters into the prolonged resting stage until puberty. Puberty तक ये यही स्टेज में रहेगा. So primary oocyte enters the prophase of the first meiotic division before birth, but division resumes only at puberty. So हमें wait करनी पड़ेगी birth to the puberty, ovum बनने के लिए. तो प्राइमरी oocytes कितने होंगे? 2 million. And up to the puberty only 40,000 persist. And only 500 ovulate from puberty to menopause. Okay. Every month only one ovum is ovulate, one follicle is ovulate. So from the birth to the puberty सारे follicles रहेंगे inactive phase में. So oogenesis, it is a process of maturation of primordial female germ cells from primary oocyte to mature ovum. So how it matures? So on each in each menstrual cycle, each month 5 to 30 oocytes mature, but only one ovulate and other desaturate. तो कितनी वेट करनी पड़ेगी? फ्रॉम बर्थ टू द प्यूबर्टी. ओके, प्यूबर्टी से स्टार्ट होंगे और कुछ कुछ फॉलिकल्स तो मेनोपॉज में ओव्यूलेट होंगे. ओके, सो फ्रॉम बर्थ टू 40 ईयर, बर्थ टू 30 ईयर. ओके, इतना टाइम लगेगा उस साइड को मैच्योर होने में. तो वो मैच्योर कैसे होंगे देखते हैं. So primary oocyte is surrounded by flattened epithelial cell known as the primary ovarian follicle or primordial follicle. Okay, so primordial follicle, the oogonia divides होंगे and it surrounded by the flattened epithelial cells. So that is the primordial follicle. Then this flattened epithelial cell converted into cuboidal cells and it forms the primary follicle. और फिर इस follicles multiply. ओके, पहले सिंगल लेयर सेल्स होंगे, फिर बहुत सारे लेयर्स बनेंगे. So the follicular cells multiply and oocyte is covered by the multiple layer of the cell. So this is the pre-antral follicle.
Then what happens with these multiple layers of the cell? follicular cells. तो follicular cells कहाँ से आएंगे और ओवम कहाँ से आएगा? follicular cells डेवलपिंग ओवरी में से आएगा और ओवम तो प्राइमोडियल जर्म सेल्स यॉक सेक से डोर्सल वॉल ऑफ यॉक सेक से migrate into the ovary. So multiple small cavities appear between the follicular cells. और ये small cavities फिर single cavity में convert हो जाएगी. It is known as the antral follicle. When there is a cavity within the follicular cell, it is the antral follicle. So if antral follicle enlarge होगा तो क्या होगा? Forms the graffian follicle. So it is a mature graffian follicle. So cavity enlarge and ovum is attached to the one pole of the follicle and it forms the mature graffian follicle. So जब भी ovum surrounded by the primary cells, primary follicles, this is the size of the primary follicle 100 micron, 200 micron, 400 micrometer. So when the follicle is surrounded by the ovum is surrounded by the cuboidal cell, cuboidal follicular cell. There is one membrane is appear between the ovum sites and the base, follicular cell. It is known as the zona pellucida. This is the zona pellucida. Now see these cells, the cells surrounding the zona pellucida, it is known as the cumulus oophorus. हम बोलेंगे cumulus oophorus. And cells surrounded the cavity, it is known as the granulosa cells. And outside the granulosa cells, it is a basement membrane, or surrounding this basement membrane, the cells are modified and it forms the theca interna, intercellular layer, and outer fibrous layer, it is a theca externa. So एक follicle को mature होने में 10 to 15 days लगते हैं और 5 to 10 days कौन सा follicle mature होगा. So ovulation, जब graffian follicle mature होगा तो it ovulate from the kidney, from the ovary. So graffian follicle enlarge, it bulge on the surface of the ovary and it burst open. And ovum is surrounded by corona radiata cells. So ovum is surrounded by this cell. It is known as the cumulus oophoricus. So this cumulus oophoricus, it forms the corona radiata cells. So empty graffian follicle is converted into corpus luteum. Okay, other cells, these granulosa cells and the outer covering, it forms the corpus luteum. So here ovum discharge from the ovary, ovulate from the ovary. So in the ovary, outer cortex and inner medulla. So in the outer cortex, we can see the follicles. So we can see the multiple primordial follicles. Okay. We can see the corpus luteum.
and we can see the mature follicles are less in number and the primordial follicles are more in number. So these are the stages how these follicles matures and passes through the different stage. So just before ovulation, the primary oocytes complete the first meiotic division and it divides into the two cells. One large cell from the secondary oocyte, and this secondary oocyte immediately enters in the process of second meiotic division. Okay? फर्स्ट म्योटिक डिवीजन में वो कितने टाइम वेट करेगा? बर्थ टू द प्यूबर्टी. प्यूबर्टी में भी जो फॉलिकल मैच्योर होगा तभी ओव्यूलेट होगा. जस्ट बिफोर ओव्यूलेट इट कंप्लीट द फर्स्ट म्योटिक. Then when it completes the first meiotic division, it enters into the second meiotic. अब सेकंड meiotic division में भी उसे वेट करना पड़ेगा जब तक if it is fertilized by the sperm, it completes the second meiotic division. So where it fertilized? So it fertilized in the fallopian tube. So sperm reach the fallopian tube and fertilize the ovum. So it completes the second meiotic division and again divided into two cells. So both the cells receive the same number of chromosomes as the secondary oocyte. And it divides into the one large cell and one small cell. Small cell is second polar body and large cell is ovum. So when it fertilized by the sperm, it completes the second meiotic division. So we can see between this red line is zona pellucida. Between the zona pellucida and cell membrane, there is a vitelline membrane. So in the vitelline membrane, there is a polar body. In the vitelline membrane or perivitelline space, it is a polar body. So two division होंगे, two polar bodies. When the first polar bodies during the first meiotic division, it divides, there may be a three polar body. So if fertilization takes place, secondary oocytes complete the second meiotic division, result in formation of the two unequal daughter cells with 23 chromosomes. So these last cells with more cytoplasm, the last cells with abundant cytoplasm is known as the mature ovum, and small cell form the second polar body. So here again another picture, the ovum, zona pellucida, perivitelline space, first polar body and corona radiata cells. Okay. Here the ovum is rupture, ovulate with the first polar body. So what is the size of the ovum? Here this size of the red blood cell here. So mature follicles, antral follicles, it is around 10 mm in size. Before the maturation, before ovulation,
It is around 20 mm in size, and these are the days which taken for maturation of the follicle. So largest cell in the human body is the ovum, is 20 mm in size. Smallest cell it is a sperm cell. The head of the sperm is roughly 4 micrometers long. So that's it about the oogenesis. Okay, so it starts the after fertilization. There is a formation of the germ disc, and then at the 3rd week of intrauterine life, then the 5th week of the intrauterine life, then after the germ cells divide up to the 7 months. Okay, and then this division again started at the puberty, and then it continue up to the menopause in female. So that's it about the oogenesis. Thank you.